ये अब हमारा चिकन जो है वो फ्राई है, खूबसूरत कलर रहेंगे। ये हमारी स्पैगेटीज तैयार हो गई हैं। अगर आपने उसी वक्त स्पैगेटीज बनानी है तो इसको स्टेन करके इसका ऊपर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें।